Be fearless and not live in oblivion. Let's face disaster with bravery and courage. Welcome to another special episode of Facing Disasters. In this series, we warn you of various disasters that can happen to any one of us at any given point of time in our lives. So, in this program, we educate you of different safety measures, what to do, what not to do, and how to deal with disasters. We also have a panel of eminent guests, and it is our effort that we provide you with accurate information and facts. We have with us Krishna Vatsal, member of NDMA. Our next guest is Dr. Manish Singhal, professor and head of department, plastic surgery AIMS. Also with us, we have Prashant Lonkar, fire advisor, MHA GOI. Joining with us today via Zoom, Vishali, assistant director, NFSC. Finally, we have with us some children in our studio, as they say that children are very inquisitive by nature. So all their questions will also be answered by our panelists. But first of all, my first question is for Krishna ji. As urbanization grows, how is NDMA teaming up with the central and state government to increase and harness the capacity of fire safety? As cities are expanding, it has become very important to expand and modernize fire safety. There is a need for more fire stations, procurement of more equipment, and proper training of fire servicemen. And this is why the central government at the national level has prepared a scheme of rupees 5,000 crores under which all states will receive both the manpower and technical help. Its objective is to look after the strengthening of the fire services at the national level, more coverage of fire services in cities as in sites. There are many other problems arising like multi-story building rising to 20 to 30 floors. These buildings require a special type of fire prevention, and also the cases of building collapse has also increased. And at such a time, we have to understand what roles the fire services play. This scheme, which is prepared by our government under which NDMA, Ministry of Home Affairs, Directorate of Fire Services will work together towards the improvisation of fire services in the next 2 to 3 years. Yes, it is only through hard work that we will be able to deal with horrible situations. Prashantji, next question is for you. When we talk about fire services, its expansion and smooth functioning is growing rapidly. I therefore request to kindly tell us about it to our viewers. First of all, as Sir previously mentioned, as per the National 15th Finance Commission, we have received 5,000 crores, which will be used to modernize state fire services. With this, the state fire services will increase the number of fire stations. With our current analysis, there is a need for 64% of fire stations. If the number of fire stations increases, then other requirements too increase. There is a need for a minimum of 2 fire trucks per station, and also to improve our response time in cities, which will be at least 3 to 5 minutes to the place of rescue. This is our joint effort
forward, and our modernization plan includes the usage of digitalization in fire services, so that in the days to come, we are able to see that if we respond to a fire call, this method will help them to connect with the experts at the headquarters, and it will enable to witness the situation and give necessary direction to douse the fire at the earliest. निर्देश दे के उस आग को उसी वक्त काबू पाया जा सके जो हमारी एनओसी Our पोर्टल्स है वो NOC अभी portal are currently जो following the कन्वेंशन सिस्टम में conventional जा रही system. है We तो want to एनओसी make the पोर्टल को NOC हम portal ऑनलाइन online, करें install हमारे हर GPS गाड़ी में system and जीपीएस tracker in सिस्टम all our जीपीएस ट्रैकर vehicles हो so ताकि that हमारा all जो our calls कॉल are जो है streamlined अभी and कुछ our जगह पे response to कॉल these 101 calls पे are आता है immediate. कुछ पे अभी नए दिशा निर्देशों के हिसाब से 112 पे आता है कई बार इस पे कंफ्यूजन है लोगों को कि किस में कॉल करें तो उसको हम एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि कॉल की जो दर है कॉल का रिस्पांस इमीडिएट हो उसकी कार्रवाई त्वरित हो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं तो We are हमारी trying जो to strengthen our ट्रेनिंग training सेंटर्स है उसको centers, new स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम equipment and नए नए stimulators are वहाँ पे acquired इक्विपमेंट्स so और that our सिमुलेटर्स ला trainees, रहे with हैं the help of ताकि virtual हमारे जो stimulators ट्रेनीज and है practical उनको stimulators, वही will receive वर्चुअल all necessary रियलिटी training that will eventually वर्चुअल improve their skill सिमुलेटर्स development. और प्रैक्टिकल सिमुलेटर्स के तहत हम उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि उनकी जो स्किल के कौशल विकास है उसका बहुत तेजी से आगे बढ़े इसके लिए हमारे प्रयास जारी है बिल्कुल प्रशिक्षण बहुत Very ज़रूरी true. है जब जिस Training is तरह की आपस crucial में while dealing इंटरेक्शन की with बात disaster करते हैं like fire. हमारे My साथ next डॉक्टर question मनीष is भी for जुड़े हैं Dr. Manish डॉक्टर ji. मनीष पहला सवाल When a मेरा person यही is है कि struggling to deal with a आग disaster से like fire, निपटना आग से what should be बचाव our के उपाय first की step? तो कई बार चर्चा We हुई often लेकिन see a situation जो व्यक्ति relating to उससे any उस वक्त disaster जूझ get रहा होता है worsened due to panic उसका behavior. पहला कदम या फिर पहली सोच क्या होनी चाहिए क्योंकि लगातार हमने देखा है कि पैनिक सिचुएशन ही सबसे ज़्यादा स्थितियों को खराब करती है किसी भी आपदा की परिस्थिति को लेकर It is only through knowledge that one can save themselves from a panic situation. One should understand that in a fire related disaster, it is only just the heat that can harm you, but you are also inhaling poisonous gases which will cause coughing and eventually more fatal issues. There are two things that one should understand. First of all, a person needs to get out of the house or building. But in a situation where a person is unable to escape, then you should look for a wet cloth and place it near your nose. Firstly, this will reduce the heat near you as the hot air will go through the wet cloth, and secondly, in this process, all soluble might be trapped in the cloth, which will prevent you from inhaling poisonous gases. This is a simple method that everyone should follow if you are stuck in an enclosed space. Otherwise, getting out of the place should be your first priority. पॉइजन से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये एक सिंपल तरीका है अगर आप अंदर फंस गए हैं बाय द वे देखिए बाहर निकलने का कोई वो नहीं है बाहर तो आपको निकलना ही चाहिए वो तो आपका पहला सॉल्यूशन होना चाहिए और अगर आपको लगता है कि नहीं निकल पा रहे तब आपको ये करना चाहिए दूसरी बात आप थोड़ा सा अगर झुकेंगे आप समझेंगे Also, कि you will गर्म गैस जो है understand that वो if you stay गर्म down चीज़ or हवा bend में a रहती है little, ऊपर की the तरफ hot gases तो stay अगर आप in the ज़मीन air की तरफ थोड़ा upwards. रेंग के So, if you चलेंगे crawl तो towards the नीचे exit, पॉइजन है the स्प्लैश method कम will होगी protect क्योंकि you वो from the गर्म नहीं hot होगी air. और थोड़ा रेंग रेंग के अगर आप दरवाजे की We तरफ all जाएंगे need to तो आप understand उसको that we have to focus उसकी more जो on the gases that we उसकी are जो नुकसान inhaling है than उस गर्म getting हवा burned. से उससे आप If you अपने follow आप को these two प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो precautionary आपको ये measures, समझना है then कि you will be able आपको to जो better आग से save जलने से yourself in a ज़्यादा fire आपको खास related की नली panic situation. में जो गैस जा रही है उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है तो ये दो अगर आप प्रिकॉशन रखेंगे तो आप डेफिनेटली अपने आप को बेटर सेव कर सकते हैं पैनिक सिचुएशन में बिल्कुल As और we जिस have been तरह से constantly encouraging लगातार people through this हम इस platform मंच के that माध्यम the से only way to दिशा deal दे with रहे हैं कि disaster is through आपदाओं self से confidence. बचने का So सबसे we should पहला try to हथियार never lose it, आपका खुद even का during a जो disaster. आत्मविश्वास है वो We है also have उसे Vishali मत ji, खोने दीजिए Assistant और इसी Director, पर एक क्लिक लेके हमारे NFSC. साथ वैशाली सिंह भी जुड़ी हुई है असिस्टेंट Vishali डायरेक्टर ji, what are the एनएफएससी preventive measures सर that we need to वैशाली जी follow जब for हम fire आग से safety? सावधानियों की बात करते हैं तो उसके पीछे के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए देखिए जो अभी हाल ही में जो केसेस आए We हैं have आपने देखे received many होंगे cases in कोचिंग recent क्लासेस times, में like fire broke हॉस्पिटल्स out in में coaching एजुकेशनल classes, बिल्डिंग्स में hospitals, फायर के education केसेस बहुत buildings, आए हैं etc. और उनसे जो The number इंजरीज of है fire cases फैकल्टीज की has जो increased, with a lot of जो injuries फैकल्टीज हैं sustained by उसकी नंबर faculties and काफ़ी ज़्यादा others. रही है Though we have तो our ये teams and fire केसेस हालांकि services to हमारे deal पास with फायर emergencies सर्विसेज like है this, हमारे पास but we should इमरजेंसियों all follow को डील certain करने के लिए preventive काफ़ी measures सारी so टीम that है such पर अगर situations are हम not created in the सावधानियां first बरतें place. कि ये ऐसी Even if a सिचुएशन fire क्रिएट breaks ही ना out, हो if we are able to बट handle आग it at बनने the से initial पहले ही जो stages आग है and वो एकदम extinguish शुरू it, के स्तर में then अगर we हम will उसे avert a big बुझा disaster दें from happening. तो ये काफ़ी
कारगर रहेगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर्स है, उसको क्षति जो है नहीं पहुंचाएगी। तो सबसे पहले जो मेन मुख्य First of कारण all, the रहता main है कि cause is through इलेक्ट्रिसिटी electrical जो usage, बिजली है, faulty and low बिजली और quality बिजली के electrical स्तर lines अगर वो which are not फॉल्टी है, according to the Bureau क्वालिटी of के नहीं Indian है, standards, बीआईएस faulty ब्यूरो के जो wiring, स्टैंडर्ड्स के हिसाब overloading, से नहीं है, incorrect use of heaters, वायरिंग हमारी अगर children तरीके से mishandling नहीं heating होती or है या electrical ओवरलोडिंग हम equipment, करके etc. रखते हैं, If we are हीटर का able to गलत look after इस्तेमाल, and तो control इस all तरह these से जो है areas कभी-कभी as इलेक्ट्रिकल preventive इक्विपमेंट्स या measures, हीटिंग then इक्विपमेंट्स के fire साथ can जो be है controlled to a large extent in the छेड़छाड़ initial करते हैं। तो ये stages. सारे रीजंस अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे अगर हम इस पे काबू करें, अगर हम इसे कंट्रोल करें, तो आग जो है बहुत हद तक पहले ही स्तर पे रोकी जा सकती है। इसके अलावा किचन जो है, Second किचन kind में of जो हम fire is खाना caused in बनाते the हैं, उस kitchen. केस में हम कभी-कभी Synthetic कॉटन के clothes पिंस easily या catch fire, सिंथेटिक कपड़े का improper इस्तेमाल storage of करते हैं, LPG या cylinders, एलपीजी faulty regulators, सिलेंडर की etc. स्टोरेज are है, some वो of the सही causes of तरीके से ignition नहीं होती sources. है, It is therefore हमारे our लिए रेगुलेटर सही responsibility not तरीके to से नहीं store लगी रहती combustible है। material तो around ये any सारी चीज़ों ignition का ध्यान source. रखना बहुत ज़रूरी है कि इग्निशन सोर्सेज जो है, आग के जितने भी स्रोत है, उसको हम कंट्रोल कर सके, उसके आसपास कंबसिबल मटेरियल का स्टोरेज ना जी करें। बिल्कुल, तो ये तमाम वो बातें हैं These जिनका are ख़्याल therefore all the रखकर हम preventive इस measures which आपदा we से can निपट सकते practice हैं। in वक्त order एक to ब्रेक का prevent है, this लेकिन disaster. ब्रेक पर Let's जाने से take a पहले short commercial महत्वपूर्ण break. जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है, उसकी रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 30 सितंबर 2023 है और awards.gov.in और ndma.gov.in पर जाकर आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी बहुत कुछ और है, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आपदा के सामना के साथ। मुंबई, एक व्यक्ति की बारिश में फंसी गाड़ी दम घुटने से हुई मौत। बारिश के समय सड़क पर भरे पानी में न जाएं। आपकी गाड़ी पानी के नीचे न दिखने वाले गड्ढों में फंस सकती है। गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी खराब हो सकता है। गाड़ी के खिड़की दरवाजे जाम हो सकते हैं और दम घुटने के कारण आपकी जान भी जा सकती है। बारिश के समय रेडियो और इंटरनेट से मौसम की जानकारी लेते रहें। बचाव के लिए गाड़ी में हथौड़ी आदि रखें। गाड़ी गड्ढों या बहते पानी में न ले जाएं। आधा मीटर ऊंचा पानी भी आपकी गाड़ी बहा कर ले जा सकता है। बरसात के समय बिजली के खंभे के नीचे न रुकें और टूटे हुए बिजली के तारों से सावधान रहें। तैयारी में है समझदारी। NDMA द्वारा जनहित में जारी। Flood water leaves behind hidden dangers. It is important to remain watchful. Go back home only after official go-ahead. Get all electrical equipment checked. Check water and sewer lines too. Stay away from slippery flood debris and sharp objects. Watch out for broken electric poles and wires. Use mosquito nets to prevent malaria. Drink boiled or chlorinated water. Don't eat what has been in flood water. Don't let children play in flood water. Help others if you can. Be smart. Be prepared. Welcome back everyone to our program, Facing Disasters. We always try to invite children to our program who are going to be our future. Today we have students from Noida Army Public School. Let's learn from them what are the questions they have in their young minds. My question is, how can we protect our buildings from fire? In order to protect our buildings from fire, Government of India has several standards. We have a standard called National Building Code Part 4, under which it guides us how to protect our buildings from fire. It is divided into two parts. First is life safety and the second is property protection. अगर आप जनरली इसको विभाजन करना चाहे तो एक है उसमें लाइफ सेफ्टी और दूसरा है प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो लाइफ सेफ्टी में कि हम अपना पहले स्वयं का बचाव कैसे करें, उसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि भवनों की एक फायर रेजिस्टेंस रेटिंग होनी चाहिए। In life safety, it is about how to save ourselves. Preventive measures like resistant ratings of buildings, separate storage for combustible materials. All equipment should be according to ISI standards
electrical wiring with एक high विशिष्ट resistance, निर्धारित and general मापक के awareness अनुसार towards हो fire safety. और हमारा For protection, व्यक्तिगत a detailed जो guideline is अवेयरनेस है mentioned फायर in the सेफ्टी के National प्रति Building Codes वो and उसके many other प्रति हम Bureau of जागरूक हों। Indian ये standards. आपका For the प्रिवेंशन मेथड standard हो of गया बाकी firefighting in प्रोटेक्शन के buildings लिए like way आग rising system, फायर फाइटिंग के लिए firefighting भवनों में tanks, वेट fire राइजर सिस्टम होता है extinguisher, फायर फाइटिंग fire टैंक्स detection होती है system, फायर etc. एक्सटिंग्विशर्स है फायर Central डिटेक्शन government सिस्टम्स है established the Model इसका सारा Fire Service विस्तार Bill में 2019, नेशनल बिल्डिंग under कोड्स which और all कई these things सारे have been ब्यूरो ऑफ इंडियन mentioned. स्टैंडर्ड्स के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें इसका विस्तार में उल्लेख किया है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल फायर सर्विस बिल 2019 लाया है। A law has been उसमें ये enforced सारी in all चीज़ों का 28 प्रावधान किया states है and और 9 union जो territories 28 that if a स्टेट्स है building और is above 9 15 meters यूटीज from है a उसमें residential सभी building में or ये an चीज़ें educational building एक or an नियम बना दिया industrial है कि अगर building that आपके is above 9 भवन जो है meters, 15 मीटर there से are various रेसिडेंशियल बिल्डिंग measurements to ऊपर be है तो implemented उसमें क्या क्या accordingly. मापक होने चाहिए। Also, अगर if आपका any building is एजुकेशनल occupying बिल्डिंग है 500 9 meter per मीटर square के ऊपर or है more at आपका any floor, इंडस्ट्री है 9 मीटर्स के ऊपर there है they उसमें require क्या by law रखा to होना install चाहिए। specific अगर आपका firefighting कोई भी equipment भवन है जिसमें and 500 मीटर systems, स्क्वायर which the एरिया fire से ज़्यादा department एरिया keeps है all these आपका records. किसी भी फ्लोर पे If any तो house उसके लिए owner fail to विशिष्ट comply प्रकार to के all the फायर rules, फाइटिंग then इक्विपमेंट्स no और objection यंत्रणा certificate will लगनी not be चाहिए provided to और them. फायर डिपार्टमेंट Only इसका after the पूरा ब्यौरा रखते implementation हैं of all these और things, जब the आपके building पास will be ये सारी protected चीज़ें from fire नहीं है dangers. तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपको ये इम्प्लीमेंट करना होता है उसके बाद ही आप इसको भवन आपका सुरक्षित होता है। तो सजग We can only सतर्क और deal with any निरोगी disaster रहकर by जिस being तरह से आपदाओं cautious, से निपट सकते हैं, alert, and उससे fearless. बढ़कर कुछ भी नहीं है। Students, पूछिए ask your अपना सवाल और नाम questions. जरूर बताइएगा। मेरा ये My सवाल है question कि is, what are the new एनडीएमए guidelines being formulated फायर by सेफ्टी पे NDMA क्या दिशा regarding निर्देश fire बना रही safety? है अभी? कृष्णा सर आप जवाब। राष्ट्रीय स्तर पर हम गाइडलाइंस हमने इशू किया है। At the national level, we have issued गाइडलाइंस के guidelines. तहत According to the guidelines, शहरों में क्या there are मानक होने various standards चाहिए, for cities and गांव में क्या villages. मानक होने Like, what is the चाहिए, difference between the शहरों में response for cities and villages? कितने समय में रिस्पांस होना चाहिए, गांव में कितने समय में रिस्पांस होना चाहिए। तो जैसे कि शहरों में 5 से 7 मिनट In में cities, response during a हमें fire करना complaint, चाहिए, the कोई भी response फायर time का should be कंप्लेंट around 5 to 7 गांव minutes. में However, 15-20 in मिनट villages, में the response time हमें is पहुंचना 15 to की 20 ज़रूरत है। minutes. These तो are इस the तरह के standards हम we मानक set for them. निर्धारित करते हैं जो फायर स्टेशंस में क्या उनकी क्षमता होनी चाहिए, The कितने लोग capacity होने in a fire चाहिए, है station, ना। number इन of सारी manpower, बातों का etc., हम are the अपने many गाइडलाइंस things में we हम arrange and are प्रावधान mentioned in करते our हैं। guidelines. पर गाइडलाइन से आगे बढ़ करके Apart from फिर the guidelines, कैसे the kind of ट्रेनिंग होनी training, चाहिए, facilities, and कैसी general सुविधाएं awareness होनी for the चाहिए, public are also looked after. और Our लोगों को Honorable किस तरह Prime की Minister जानकारियां is the देनी chairman चाहिए। of NDMA, माननीय who has प्रधानमंत्री always NDMA encouraged के the fire चेयरमैन services हैं, should उनका visit हमेशा schools से and इस बात colleges पे to आग्रह educate रहा है children about the various कि information फायर and सर्विसेज essential को drills स्कूल्स relating में, to fire कॉलेजेस में services. जाकर किस तरह से बच्चों को फायर सर्विसेज के बारे में, जो फायर के जो एसेंशियल ड्रिल्स होते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। एक सवाल मैं और जानना चाहूंगी। My question is for Dr. Manish, as we know that there are different kinds of fire. So how do we differentiate it as and when we are rendering our services to society during a fire emergency? डिफरेंशिएट कर सकते हैं खास तौर पर ताकि अपने लेवल पर हम कुछ ना कुछ मदद कर पाएं सोसाइटी की। As I have mentioned earlier, when we talk about building fire, which is a closed space, fire where smoke is generated from all sides, whereas in other cases there are high risk of getting burnt like fire caused during puja or cooking as when we practice floor cooking. There are more chances of getting burnt. कपड़े पहन के हमको जो है वो कोई भी खाना बनाना चाहिए और जैसे जो घर में जो फ्लोर कुकिंग जिसे बोलते हैं हम कि ज़मीन पे बैठ के जो हम कुकिंग करते हैं उसमें आग का रिस्क ज़्यादा होता है और जो आपके लटकते हुए कपड़े हैं उनमें आग का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये जो नॉर्मल जो आग से बचने के जो ये तरीके हैं कि आपको So the steps to prevent it would be practice cooking at a higher level and avoid wearing loose-fitted clothes so that it reduces the risk of catching fire while moving in the kitchen. And if a fire breaks out, we all should have basic knowledge about first aid while attending to a victim. Use normal water and soak a cloth and wrap the person's affected area so that it will cool down and not damage the tissues of the victim and rush them to the nearest hospital. नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी है जो पीने लायक है, देखिए बहुत ठंडा पानी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसके अपने नुकसान होते हैं। तो नॉर्मल पानी जो आपको मिलता है कैसे भी नल के नीचे या गीले कपड़े में या चादर में आप उस पार्ट को ठंडा कीजिए जिससे कि जो हीट का जो डैमेज है वो टिश्यूज़ को ना पहुँचे, जो हीट का डैमेज है वो अंदर के टिश्यूज़ में ना पहुँचे और अर्लीस्ट उसको पॉसिबल हॉस्पिटल में
Rightly said, in order to deal with any kind of disaster, we all need our presence of mind because we have read all about it in our books but fail to put it in action when the time comes. My question is, during a fire emergency, what are the things that we should not do? काफी अच्छी सवाल है कि हमें जनरली A ये very नहीं good पता कि क्या question. क्या करना Generally, we are चाहिए asked लेकिन what are the things हमारे we should do एक्शंस when a fire हमारे breaks out, एक्शंस ऐसे but होने at चाहिए times जो our कि बातों actions को बढ़ावा during दे such a सके या situation हमें might be मजबूर wrong, कर सके which will तो cause us कुछ more harm than help, पॉइंट्स है कुछ बातों even को causing ध्यान us में देना severe चाहिए injuries. कि अगर So we आपके have to घर में keep in आग mind लग some गई है points while dealing मान with लीजिए fire. तो If your clothes catch fire, आपको then you भागना should नहीं not है run as तेजी the से wind will दौड़ना नहीं है escalate the क्योंकि जो fire. In हवा such a है वो आग को situation, one बढ़ावा should lie देगी down उस and roll केस on में the ground. आपको This लेट will जाना cut है off the और उसमें oxygen supply for the दूसरा क्या fire है कि and slowly the fire आपकी will जो go ऑक्सीजन off. की सप्लाई है वो While ख़त्म हो cooking, as जाएगी sirs तो have आपकी said जो आग earlier, है वो wear बुझ cotton जाएगी clothes and avoid काफ़ी सारे synthetic पॉइंट्स सब clothes. लोगों ने कवर कर दिया During a जो कि fire caused by आप electrical कॉटन faults, कपड़े never पहनिए use सिंथेटिक water कपड़े and यूज़ until नहीं the करना चाहिए electricity supply is cut off, इसके don't try to अलावा douse the fire. इलेक्ट्रिक फायर्स में हमें ध्यान रखना है कि पानी का इस्तेमाल ना करें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जब तक बंद नहीं हो जाती है आपको उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और एक बार आपने बुझा दिया है तो उसके बाद ही आप वैसे इलेक्ट्रिक फायर्स को बुझाने का अटेम्प्ट करिए इसके अलावा जो Also, तेल do की not use आपूर्ति है water to वेजिटेबल extinguish ऑयल हो fires गई या caused by फिर oil like फ्यूल vegetable हो गई oil, पेट्रोल हो गई kerosene, ये सब में petrol, आग etc. बुझाने में पानी Instead, का use इस्तेमाल sand, नहीं mud, करना special चाहिए powder आग for such बुझाने kind of नहीं fires चाहिए because the use of water will स्पेशल only पाउडर make the आते हैं fire उसका grow bigger. इस्तेमाल करिए बट पानी का इस्तेमाल से ये छोटी आग जो है और बढ़ सकती है तो इन सभी बातों We का all have ख्याल to keep हमें in रखना mind है all मंच these के things माध्यम से as we हमारी create कोशिश यही है awareness कि towards हम different जागरूकता को disasters. बढ़ावा Now दें it's time for तमाम another आपदाओं small को break. लेकर और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे ये एक जानकारी साझा करना चाहते हैं महत्वपूर्ण जानकारी है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है उसकी रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 30 सितंबर 2023 है और awards.gov.in और ndma.gov.in पर जाकर आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार भी बहुत कुछ और है कहीं मत जाइए जुड़े रहिए आपदा के सामना के साथ मुंबई, एक व्यक्ति की बारिश में फंसी गाड़ी दम घुटने से हुई मौत। बारिश के समय सड़क पर भरे पानी में न जाएं। आपकी गाड़ी पानी के नीचे न दिखने वाले गड्ढों में फंस सकती है। गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी खराब हो सकता है। गाड़ी के खिड़की दरवाजे जाम हो सकते हैं और दम घुटने के कारण आपकी जान भी जा। बारिश के समय रेडियो और इंटरनेट से मौसम की जानकारी लेते रहें। बचाव के लिए गाड़ी में हथौड़ी आदि रखें। गाड़ी गड्ढों या बहते पानी में न ले जाएं। आधा मीटर ऊंचा पानी भी आपकी गाड़ी बहा कर ले जा सकता है। बरसात के समय बिजली के खंभे के नीचे न रुकें और टूटे हुए बिजली के तारों से सावधान रहें। तैयारी में है समझदारी। NDMA द्वारा जनहित में जारी। Flood water leaves behind hidden dangers. It is important to remain watchful. Go back home only after official go-ahead. Get all electrical equipment checked. Check water and sewer lines too. Stay away from slippery flood debris and sharp objects. Watch out for broken electric poles and wires. Use mosquito nets to prevent malaria. Drink boiled or chlorinated water. Don't eat what has been in flood water. Don't let children play in flood water. Help others if you can. Be smart. Be prepared. Welcome back to our show. Krishna ji, what kind of final message you would want to give to the public regarding fire safety? All the country and all the people should have necessary knowledge about fire and how to save themselves during a fire emergency and also have fire services. And if such a situation occurs near you, you should not cause crowding and organize ourselves in such a manner that you are not hindering the fire services and they can perform their duties efficiently. Without any compromise, we should take all essential precautions and preparations for fire safety. We should consider this our individual responsibility and generate awareness about it at a personal, familial, and societal level.
के बचाव के लिए जो आवश्यक तैयारी और जो आवश्यक प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो हम ज़रूर करें, है ना। इस बात पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके बारे में हमें व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, समाज के स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये जो यूथ How है, can जिस youth promote युवा mass आवाज़ awareness की हम for बात fire करते safety हैं, or ये similar किस तरह disasters? से जन भागीदारी को आगे बढ़ा सकते हैं आग से बचाव या इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए? आग से बचाव के लिए मैं युवाओं को यही Regarding संदेश देना fire चाहता हूँ safety, my message to कि the youth आग is we should का keep हमारा जो zero fire उद्देश्य है accidents उसमें जीरो as our फायर ideal एक्सीडेंट्स का objective. हमने We have to think जो of a है societal आइडियल setup रोल where रखना fire चाहिए। never breaks हम out. ये But समाज how की do we व्यवस्था achieve सोचते that? हैं जिसमें आग By लगे ही ना। making it our अब वो individual कैसे होगा, जैसे मैंने responsibility पहले to भी कहा create था and कि हम increase उसको एक awareness अपनी around your व्यक्तिगत family, society, रिस्पॉन्सिबिलिटी and समझें, surroundings. हमारा अपना व्यक्तिगत स्तर को बढ़ाए, हमारी अवेयरनेस बढ़ाए और हमारे साथ जो आसपास में हमारे परिवारजन है, हमारी सोसाइटी है, उसका अवेयरनेस बढ़ाए। और दूसरा, जितना जो बड़ी आग हुई है जिसमें ज़्यादातर जो कैजुअलिटी हुई है, AMRI फायर हो गया, उपहार सिनेमा हो गया, जितनी भी एक्सीडेंट्स हुई है वो धुएं के कारण हुई है। Secondly, when जैसे a सर big भी कह fire रहे थे, breaks out तो and there are high एस्केप रूट ना casualties मिलने के involved, कारण हुई है। it is mostly अभी caused by दिल्ली में smoke, जो एक्सीडेंट inhalation हुआ due था to lack of escape ट्रेनिंग route. सेंटर At Mukherjee Nagar, at the training center, most kids escaped by jumping through the windows. So we have to make sure that the buildings where we are residing has safe exit routes. All buildings should have at least 2 exit routes so that during an emergency, even if one exit is closed, we can use the other one. जी, एक क्विक रिएक्शन हम वैशाली जी से How ले can we लेते हैं। create वैशाली जी, general किस तरह awareness से about जन जागरूकता disasters को using बढ़ावा mediums like दिया young जा people and सकता social है media? बच्चों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि हम इस आपदा से निपटने में कहीं भी एक कदम भी पीछे ना हो, कोई समझौता नहीं होना चाहिए? देखिए, बच्चों को सबसे The ज़्यादा most ज़रूरी है important कि thing that आग children की have to आग के learn while केस में, dealing with आपकी disaster like आपदा के fire केस is में giving them the क्या necessary करना training. चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय Participation है in मेरा training है and कि fire drills is the ट्रेनिंग best में solution. ज़्यादा से ज़्यादा National Fire पार्टिसिपेट करें। Service College and ट्रेनिंग various में states मॉक fire ड्रिल्स service में organizations जो conduct आपकी mock drills, इवैक्यूएशन ड्रिल्स होती है, evacuation drills, training and exercises नेशनल from फायर time to सर्विस time कॉलेज for भी public काफ़ी welfare and बार ऐसे awareness. एक्सरसाइजेस को Young and old कंडक्ट people should करवाते हैं। actively भारत के participate in विभिन्न such mock राज्य, drills सरकारी so निकाय, that in a यूनियन panic टेरिटरीज के जो situation फायर you will सर्विस know how to deal ऑर्गेनाइजेशंस with है, it. वो टाइम टू टाइम ऐसी ट्रेनिंग्स और एक्सरसाइजेस जो है पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, अवेयरनेस के लिए कंडक्ट कराती है। तो बच्चे, युवाएं और सभी इन सबको, आप सबको ऐसे मॉक ड्रिल्स में काफ़ी सीरियसली हिस्सा लेना चाहिए, ताकि आप पैनिक सिचुएशन में आप पैनिक ना करें। हमारे बच्चे, हमारे Our दर्शकों के students लिए have prepared a एक बहुत slogan प्यारा which they स्लोगन would लेकर like to लाए, हम share चाहते with हैं you कि वो all. स्लोगन वो आपसे साझा करें। Be smart, be prepared. यहाँ पर विशिष्ट मेहमानों का पैनल जुड़ा है। We would उनको like to हम thank our धन्यवाद eminent करना चाहेंगे panelists कि for इस coming to मंच our पर आकर program उन्होंने and अपने sharing विचार us साझा your किए। insights. कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, आपका शुक्रिया। और साथ ही साथ Also, we would like to वैशाली thank जी हैं, Vishali ji जो for हमारे साथ joining जुड़ी us हुई हैं। आपका via भी Zoom. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you और all. आपदा की We will श्रृंखला meet में you all हम again in the आपसे series फिर of facing मिलेंगे एक नए disasters. विषय के साथ, Always लेकिन तब remember, तक there इस is बात का wisdom निगाह in कि preparedness. आपकी Goodbye. तैयारी में ही समझदारी है। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए और मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।